हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं जॉर्डन पीटरसन ऑन व्हाई पीपल आर सो अनहैप्पी। लेट्स सी जॉर्डन भैया का क्या इवैल्यूएशन है कि लोग क्यों दुखी हैं आजकल। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम पास के। लेट्स डू दिस। This is something that I think generally people don't think about, stuff like this. And my Hmm. next question for you is, it seems that more and more in today's society and just societies in the world today, people are more depressed, more anxious, more suicidal than ever before. Is that a symptom of something unusual going on in our society? I think one of the major problem with today's time is that we have internet, we have connectivity, we have hyper connectivity instead. That we are continuously looking at someone else's life, and that someone is continuously showing us their lavish lifestyle if they are living. So we are constantly in this subconscious comparing realm of the mind. So that I think that is making us unhappy the most. And second thing is that we don't love ourselves, like we don't truly love ourselves. We know how to love ourselves, we know the cliche line that love yourself and all, but practically we don't know how to love ourselves, because loving ourselves involves forgiving ourselves from the past mistakes that we have done. I think that's the reason. Let's see what Jordan Peterson has to say. Is it just people that are more comfortable talking about it now? What is it? Why are so many people It's a good depressed? question. It's a good question. I I I just love this guy जॉर्डन पीटरसन. क्या वॉइस टेक्सचर है भाई. और देखना कभी हैंड मूवमेंट, देखना कभी एक्सप्लेनेशन करते ना, तो जो हैंड मूवमेंट होता है इनका वो भी बहुत सही लगता है. सही में जॉर्डन भैया, आई लव यू. I think at least part of it is the complexity of our society. It isn't certain how the future is going to lay itself out, and it isn't certain that what you knew in the past is going to be sufficient Uncertainty, fear of uncertainty, I think. for you to move forward into the future. So there's lots of opportunity, but it's very complex. And it's not easy to keep up in our world. You know, like if you look around the world, you might think, well, the happiest people are those where the standard of living is the highest. That's actually not the case. Right. And you think, okay, but why wouldn't that be the case? It's like, what do you want? Malaria and death at 40? Obviously not. But then you think, okay, what's the price you pay for a high standard of living? Well, that's easy. You virtually always sacrifice the present for the future. You're always working. I mean, you guys, you're fairly influential and you've got this good thing going, but like, it could crash at a moment's notice. You better keep your eye on it. And every day you're thinking, okay, this has to be done, and this has to be done, and this has to be done. मतलब कि वो है कि हम जब सोचते हैं कि यार हमसे जो अमीर लोग हैं वो लोग क्यों नहीं अनहैप्पी है, वो लोग क्यों नहीं हैप्पी है, वो लोग क्यों इतने ज़्यादा अनहैप्पी है, तो जॉर्डन पीटरसन का यही एक कंक्लूजन है. एक कंक्लूजन नहीं, मतलब ये एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं जॉर्डन भैया कि जो मतलब जो जितना लेविश लाइफस्टाइल जी रहा है ना, उसको मेंटेन करने के लिए उतना ही वो रगड़ भी रहा है. अगर वो एक भी दिन अपने आप को मेंटेन ना करे तो सडनली उस सब डाउनफॉल आ जाएगा उसका. ये बोल रहा है जॉर्डन पीटरसन कि वो एग्जांपल दे रहा है कि ये पॉडकास्टर का, कि तुम भी जो ये कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन तुमको भी कहीं ना बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं डर रहता है कि अगर मैं आज या कल नहीं किया तो शायद मुझे लोग भूल जाएंगे. तो इट्स लाइक he has this constant, the successful people has this constant urge to maintain themselves at the position where they are. Done. And it's so it pays off. I mean, you have a nice studio and I would presume a reasonably comfortable life, but it's not like you're not running on a treadmill to keep that going. And so that's security and it's health, but it isn't necessarily happiness, and it's certainly not necessarily freedom from anxiety. And I would say most people in the modern world, weirdly enough, have far too much to do. You know, 2 career families and a couple of kids. It's like, man, you're done. That's 60 hours a week of flat out work. So, and that can be too much. And then I also think, because our society is
philosophically unstable, and that's sort of reflected in this polarization, is that people are doubtful about whether their lives have any meaning, for example. Well, True. why bother? What's the use of it? Who cares? It's like, what difference is it going to make in a million years? And that's, life is hard, and if you just have a nihilistic viewpoint, then it's easy to be swamped by doubts and existential. So यहाँ पे नाइलिस्टिक का मीनिंग होता है कि ऐसा इंसान जिसको कोई मीनिंग नहीं नजर आता इंसानों में, इस वर्ल्ड में, तो वही बोल रहा है कि अगर आपका नाइलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है टुवर्ड्स लाइफ, देन यू आर बाउंड टू गेट डिप्रेस्ड, you are bound to get anxiety, because if you will think that I am making so much effort towards this life, and this life is showing not a single meaning. So what's the point of my effort? So you start to doubt yourself that whether should I continue to live like this or should I change it? Yeah, that's the confusion. That's a confusion that our generation has, especially nihilistic people. That and like, I think that's a mistake, because I think that your life can be very meaningful. It's proportionate to the responsibility that you take True. on, and you can learn that by कि लाइफ में मीनिंग उतना ही होगा जितना तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। जॉर्डन पीटरसन का ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि तुम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लेते हो लोगों के लिए, तब तुम्हारी ज़िंदगी में भी काइंड ऑफ मीनिंग आता है। जैसे अगर मेरा कोई बच्चा है, अगर मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं एंगेज रहता हूँ लाइफ के साथ, और कहीं ना कहीं वही एक मीनिंग भी बनता है कि कोई दूसरे की हेल्प करना। यही बात है कि जो अमीर लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, वो बाद में क्यों दान और ये सब में आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर खुद कमा के मैं खुद ही खा लूँगा तो इसमें कोई मीनिंग नहीं है, जब तक मैं दूसरे को सेटिस्फाई करके उसमें मीनिंग ना ढूंढूं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल बात है, एक्सपीरियंशियल फैक्चुअल बात है कि आप अगर किसी की हेल्प नहीं करोगे, आप अगर दूसरे की हेल्प नहीं करोगे, तो आपके लाइफ में मीनिंग नहीं होगा। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगेगा कि अगर मुझे मेरे लाइफ में मीनिंग चाहिए तो मुझे अपने लिए चीज़ें करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। दूसरे के लिए चीज़ों करोगे तब अपनी लाइफ मीनिंगफुल लगेगी। कि हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो हम लोग जब दूसरे की लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं तो हमको अपने बारे में अच्छा फील होता है। अगर हमको अपने बारे में अच्छा फील करना है, अगर हम खुद को ही सेटिस्फाई करते रहेंगे तो अपने बारे में अच्छा फील होगा भी नहीं। तो ये बात है कि दूसरे की हेल्प करना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो एक कहीं ना कहीं लाइफ में मीनिंग ऐड करता है। by watching when you're engaged in the world, and what works to sort of protect you from feelings of isolation and doom. And a lot of the lectures I have on YouTube are about exactly that. So I think part of it is the complexity of the modern world. Yeah. I also can't shake the sneaking suspicion that it has something to do with our diet. Really? Well, I saw this. We know that obesity is like skyrocket. Yeah. Okay. So डाइट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। probably the जैसे कि एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, शायद एंडोर्फिन से हार्मोन्स है, हाँ, तो वो सब रिलीज होते हैं। स्ट्रेस रिलीवर हार्मोन रिलीज होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो वो भी एक रीज़न है कि आजकल की जनरेशन डिप्रेस्ड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द काम जो है वो बैठे बैठे सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से बैठे बैठे हो जाता है, लैपटॉप पे हो जाता है, तो फिजिकल मूवमेंट नहीं हो पाती बॉडी की ज़्यादा, तो उसकी वजह से जो बॉडी के हार्मोन्स निकलने चाहिए वो निकल नहीं पाते, वो ट्रैप रह जाते हैं। तो उसके वजह से भी एक अनहैप्पीनेस, डिप्रेशन टाइप सैडनेस आता है। ही इज राइट दैट डाइट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। reason for that, it's not exactly certain. There might be complicated reasons for it, but certainly one of the reasons is that people eat far too many carbohydrates. Right. I saw this video from World War II about and in one of the scenes they showed all these men in New York lining up to be inducted, and it's like 20 blocks of guys with no shirts on standing in line to be inducted. Every single one of them was bone thin. Do you Every think single think one. it's the insecurity and the negative feelings that come with being overweight, or the actual food? No. I think there's something wrong with what we're eating. Interesting. And, yeah, I mean, there's more and more evidence that dietary sensitivity, for example, is linked to conditions like schizophrenia. Really? And so, yes. Watch out for that bread, y'all. Well, and also, your gut bacteria, turns out,
which you have a lot of, you have about 100 times more bacterial cells in your body than human cells, which is really quite a freaky thing to think about. Luckily, they're quite tiny, because That's otherwise true. you'll Like being a microbiologist, I can say that yes, there are many microorganisms, and they will outnumber easily any human cells. देखिए जितना ज़्यादा इंसान के बॉडी में सेल्स नहीं होते उतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, गट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, राइट? be like a giant amoeba, Yes. you know. But the gut biome produces a lot of neurochemicals, and so it does play an integral role in the regulation of your mood, which is also a very strange thing. I've been following that. Just the एक अभी रिसर्च भी आई थी जिसमें कि ये पाया गया था कि गट और माइंड कनेक्शन, कि गट में आप जो भी खाना खाते हैं और जो भी माइक्रोब्स है वो कैसे न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि ब्रेन में जाते हैं, और ब्रेन में जो भी मूड सेंटर है जहाँ पे मूड स्विंग्स और ये सब है वहाँ पे इफेक्ट करते हैं. तो गट और माइंड कनेक्शन इज रियल. क्या आप पेट में क्या डाल रहे हो, क्या खा रहे हो, उसका भी आपके मूड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. how bacteria is starting to be like play more in human health, like probiotics and stuff like this can regulate your mood. That's so freaky. Yeah, it is. That's for sure. Yeah. Well, and Same. one possibility is that, well, let's say you eat a lot of carbohydrates and sugar. Okay, so what happens is that you grow bacteria in your gut that Right. really like carbohydrates and sugar. Right. Well, so then you think, well, I'm always having cravings for carbohydrates and sugar. It's like you're having the cravings, you think. Well, maybe not. Maybe what's happened is that, you know, through a Darwinian process, you've encouraged the growth of bacteria that really like sugar and Right. carbohydrates. Do you think and that they're- same bacteria is messing with people's mood? Maybe. Yes, it could, and it's also messing with their cravings. That's I mean, we're really walking oceans, you know, like we're big creatures. I Yeah. mean, we're not big compared to like a Douglas fir or the sun, but like we're sure. pretty big creatures, and we are. क्या सही बात बोले कि आप अगर कंटिन्यूस कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट की एक बेकार बात यही है कि जैसे ग्लूकोज हो गया, बहुत कॉमन एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट का, कि अगर आप वो ज़्यादा खा रहे हो तो वो क्या करता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन फटाक से हो जाता है, मोनोसैकेराइड है ना, तो उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, लेकिन उससे एनर्जी ड्रॉप भी इंस्टेंटली होती है. तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इंसान लेजी फील करता है. तो ये वही बोल रहा है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हो तो आपके पेट में ऐसे बैक्टीरियाज ग्रो होंगे जो कि कार्बोहाइड्रेट्स मांगेंगे. तो जब आपको क्रेविंग होती है, जब आप बोलते हैं मुझे क्रेविंग हो रही है, वो आपको नहीं हो रही है, वो अंदर जो आपने ग्रो करवा लिए हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलाइजिंग बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया मांग रहे हैं. ठीक है, तो फिर आपका मूड भी वैसे ही हो जाएगा. तो ही इज़ राइट, एंड आई डोंट नो, like Jordan Peterson is very well read, like in field of biology too, like he knows about Darwinian and all this thing. Like yes, he Are liquid. great. Most of us is liquid, and you know, if you saturate yourself with carbohydrates and sugar, then you are invaded by the bacteria that live on those things, and so that's not necessarily so good for you. वही बात है कि एक टाइप का खाना खाते हुए कार्बोहाइड्रेट अगर खा रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट वाले बैक्टीरिया ही ग्रो होंगे, और वो एक टाइप के बैक्टीरिया ग्रो होने की वजह से वो एक टाइप का ही इफेक्ट शो करेंगे, और उसी से मूड स्विंग भी ज़्यादा होगा. तो ही इज़ राइट, एंड आई थिंक जॉर्डन पीटरसन एक्सप्लेन्ड इट quite well. He took into account various things, like the first of all, like he took in account the lifestyle that we are living. It's a complex society that we are living now. कि आपके पास सब, जिसके पास सब है उसको भी एंजाइटी है इस वजह से, क्योंकि उसको मेंटेन करना है फिर वो लाइफ, क्योंकि उसके लिए अब बाहर यहाँ सेट हो गया, अब वो यहाँ नहीं आ सकता, तो वो सोसाइटी की नज़रों में यहाँ है. तब अगर वो यहाँ गिर गया तो वो सोचेगा कि अरे यार अब तो मैं क्या करूँ, अब तो सोसाइटी मुझे यहाँ सोचती थी. तो उसको ये कॉन्स्टेंटली अपनी जगह भी मेंटेन करनी है, तो उस वजह से भी काफ़ी सारा अनहैप्पीनेस आता है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डाइट, कि इंसान डाइट क्या कर रहा है, गट और माइंड कनेक्शन. बहुत ही ज़्यादा मस्त वीडियो है ये. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक आई विल मेक these kind of videos even more, and if you like that then please do subscribe to my channel. Yeah, thank you.